दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। दोस्तों, आज शुरू हो चुका है डे 9। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हम आपको डेली नए ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनकी राइटिंग जर्नी हम शेयर करते हैं, उनकी स्ट्रगल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हम आपके सामने एक ऐसे ही ऑथर को लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग जर्नी के साथ अपनी राइटिंग जर्नी को लेकर के आप सभी को इन्फ्लुएंस करेंगे, साथ साथ में अपने जीवन के संघर्ष को, अपने जीवन के अनुभवों को इस किताब में वो संजोए हुए हैं। आज भी हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज के एपिसोड का, आज के इवेंट का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है बंगाल, बंगाल जिसे हम कहते हैं, और खास करके वेस्ट बंगाल के बारे में हम बात करेंगे, जिनका जो संघर्षपूर्ण स्थिति रही, जो कहानी रही, जो जमीन अधिग्रहण के बाद और जो संघर्षपूर्ण स्थिति रही बंगाल की, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक पर आज की बुक बेस्ड है। इनके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे, क्या कुछ इन्होंने देखा उस पूरे दौर में, उसको इन्होंने इस किताब के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस आज के सेशन में इस किताब में हम बातचीत करने वाले हैं सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में, साथ साथ में जो बंगाल का जो पार्टीशन रहा उसके बारे में, फार्मर्स मूवमेंट रहे उसके बारे में, और साथ में लैंड पॉलिसीज क्या क्या रही, कैसे ये इम्पैक्ट हुई और आज वर्तमान में इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उन सभी प्रॉब्लम्स का, उस दौर का, इन सब के बारे में हम विश्लेषण से चर्चा करने वाले हैं आज के ऑथर के साथ। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, आज के ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक डिस्टिंग्विश्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनकी एक्सपर्टीज सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस और हिस्टोरिकल डायनामिक्स पर है। खास करके वेस्ट बंगाल के बारे में इन्होंने मल्टीपल डिसिप्लिन्स जैसे कि लॉ, फाइनेंस, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है। ये उन विषयों पर ग्लोबली अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सो बिना देरी किए हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर राजा मुखर्जी। नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? और अध्ययन बुक्स का पूरा टीम को मेरा हार्दिक नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जिस इंटेंस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और आप एक एक्सपर्ट रहे हैं इसके, आपसे हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसके साथ साथ में वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले प्लीज आप बताइए, इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डे है मेरे लिए। आज का दिन जो है 20 जून, ये बंगाल की इतिहास में एक रेड लेटर डे है। आप सबको जान के हैरान होगा कि आज के दिन बंगाल का अनडिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग हुआ था इन 1947, एंड मुस्लिम लेजिस्लेचर्स they voted for their majority areas and created the East Bengal, and the Hindu majority area legislatures, they voted for the creation of West Bengal, and West Bengal was annexed to India. So this 20th June is the birthday of West Bengal, basically. So it was a very sad story, though. In 1905, Lord Curzon, the then viceroy of the British Empire, he crafted a conspiracy which led to the great Swadeshi movement and Bongo Bongo Andolon, right? But ultimately, it took the shape in the name of administrative excellence. It took the shape of a division of the nationalism nerve center of Bengal. They wanted to divide it, and they effectively divided it. And this was the day that West Bengal was born, on the 20th June of 1947. So this 20th June that today we are interviewing, and I'm here in the studio, right? It gives me goosebumps, to talk about it, because the book is centered on that. The land acquisition saga is all about something to do with the pre-division and post-division fiasco. And only two states of India has suffered this division. One is Punjab and one is Bengal. So it's a very dark history. And on one side, it brings me a lot of happiness. So this is the 20th June that we are sitting on, the birthday of Bengal, West Bengal.
And it was also the same day that the historic decision was sealed to divide Bengal. ओके। राजू जी, मैंने अभी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन प्लीज हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी। आप प्लीज अपने बारे में प्लीज बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और साथ में इस जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। मेरा देखिए जन्म कर्म सब कुछ कोलकाता है, द हार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहीं पे हमारा बचपन है, यहीं पे हमारा एजुकेशन है। कॉलेज भी कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज में यहाँ से पढ़ा हूँ। यहाँ का जो अली गली, इसका जो हवा, ये खुशबू, ये सब कुछ मेरे सांसों में समा के रह गया है। उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ हुआ है उसमें उसमें तो सारा इंडिया में हम घूमे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में गए हैं, बहुत सिटी देखे हैं, लेकिन कोलकाता और बंगाल एक मातृभूमि जैसा रहा है। It's like the place where I'm born. It's the water, it's the air, it's the soil that I've dwelled in, and it's in my nerve. एब्सोल्युटली। सर, मैंने काफी सुना है कि बंगाल की साइड में, कोलकाता की साइड में रीडिंग और राइटिंग का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहता है। बहुत ज्यादा लोग इस चीज को अपनी हैबिट में रखते हैं कि उन्हें डेली कुछ पढ़ना है, डेली कुछ लिखना है। मोस्ट ऑफ पीपल इस हैबिट को इनकलकेट करते हैं। आपकी लाइफ को कितना चेंज किया है इन Actually, दोनों हैबिट्स ने। एक्चुअली आप देखेंगे, जो मैं हिस्ट्री बता रहा था आपको, लॉर्ड कर्जन यही सोच उनको ये डिविजन की प्लॉय की तरफ लेके गया था, कॉन्स्पिरेसी की तरफ लेके गया था, क्योंकि भारत छोड़ो, ब्रिटिश भारत छोड़ो, ये जो आंदोलन था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बंगाल से स्टेम किया, दिस नेशनलिज्म, राइट। और उस टाइम लॉर्ड कर्जन को लगा कि अगर हम बंगाल को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम पंजाब को नहीं डिवाइड करेंगे, तो ये ब्रिटिश एम्पायर का जो सूरज है वो अस्त चला जाएगा। तो वो जो कल्चर था प्री डिवाइडेड बंगाल का, वो आज भी यहाँ पे है। और मेरा जर्नी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। मेरा वाइफ जो है वो हमें इंस्पायर किया, she inspired me a lot in writing this book. We had a dialogue. We had, faced a lot of, situations. We have seen the left rule from 1977. Then we have seen the fiasco with the Tata in Singur. We have seen the Nandigram, the famous land movement in Nandigram, right? So all these factors, kicked interest in me that I should tell people how I feel. What is the other side of the story? Not as a politician, not as an academician, but as a common man of Bengal, as a son of the soil. I should write for my people, right? और वही चीज इस बुक का इनिशिएट किया, इस बुक को इनिशिएट किया। ऑफ कोर्स द ड्राइविंग फोर्स वाज माय वाइफ विदिशा। माय वाइफ्स नेम इज विदिशा। शी वाज अ फ्रेंड, शी वाज माय गाइड, she inspired me. She said, yes, we should document, we should let people know what is the real facts, right? So that's how the book came into the light. सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बुक की जर्नी कितने टाइम पहले आपने शुरू की, मतलब इस बुक के बारे में लिखना आपने कब शुरू किया, कब सोचा इस बुक के बारे में लिखना। Actually the story began 1 year back. The story began 1 year back when, due to political activism, I was asked to write on the, how land acquisition from my political party. There was a call that if in Bengal there is a change of power, right? What, according to you as a policy analyst, should be the way to acquire land? Because in Bengal, the land acquisition has always been very sensitive matter. It was very, very sensitive. So then, that was the turning point, and I started, documenting. I started interviewing people at the ground, farmers, then the land brokers and land syndicate plays a very big role in how land is acquired in Bengal, right? I would not right now comment about rest of India, but in Bengal, this is a prominent and eminent immediate danger, right? सो उस जगह से मैं ग्राउंड लेवल में ग्राउंड रियलिटी को चेक करना शुरू कर दिया। और उसमें पहला चीज जो देखा कि द लैंड एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राइट,
is completely a body which is highly corrupted, driven by very centralized interests. एंड ये जो लैंड बैंक है, ये लैंड बैंक का कंप्यूटराइजेशन एंड अदर रिफॉर्म्स आर नॉट इन प्लेस, राइट? और लेटर ऑन एक दो मेयर आया कोलकाता में जिनकी हाथ से, जैसे लेट सुब्रतो मुखर्जी of Trinamool Congress, right? Though he was in Trinamool Congress and we were from different ideologies, he, after becoming mayor of West Bengal, right, did lot of work for, accumulating the land data for, computerization. And that computerization today has been done in West Bengal, right? For Kolkata at least. And the process for the rest of Bengal is on the way. So what happens is कि मैंने जब गया ग्राउंड में, इंडस्ट्री से बात किया, इंडस्ट्री हमको बोला कि हम जब एक एप्लीकेशन करते हैं वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, तो वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव लैंड बैंक टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम वेयर वी कैन आस्क फॉर लैंड, एंड दे हैव टू on the contrary rely on the land and land revenue department of government of West Bengal for giving them land. And sometimes it's not a parcel of land, it's not an intact parcel of land, it is fragment, sometimes it is so big they have to accept that, and they cannot return the excess of the land also. So a lot of policy errors and policy complications are there. ये सब सोच, ये सब आंखों देखा हाल, और देन ग्राउंड जो सिंडिकेट है उनका जो वर्बेटम है, वो क्यों लैंड पे फोकस किया हुआ है, लैंड क्यों उसके लिए इंपॉर्टेंट, वाई लैंड इज एन आइडेंटिटी फॉर द फार्मर, स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, ये सब कुछ, ये सब विषय हमको एक वो दिया, इम्पेटस दिया, और ऑल्सो इट गिव मी अ किक टू राइट. And I thought that if I cannot have good chapters written on them, if I cannot document on them the points, then I would be doing a justice for my next generation, right? There should be something, some reference point which they can get in, and they should know that there is an exhaustive research done and there is a documentation of the actual facts and figures for the people of Bengal and the rest of India to decide developmental aspect, right? I had decided to write this book, and 1 year back this entire procedure started with me. ओके, सर ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे लॉजिक्स आप एक जगह पर रख करके जाएं, अपनी बुक के थ्रू रखें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है बंगाल की, कोलकाता की, इंडिया की, उनको ये फैक्ट्स पता हो कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उनका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या बन सकता है। तो ये जरूरी है कि बुक्स के थ्रू में सब चीजों को संजो के रखें और अपने रीडर्स तक ये चीजें पहुंचाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजा मुखर्जी से, इनकी बुक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और ये बुक, ये किताब स्पेसिफिकली बेस्ड है बंगाल की हिस्ट्री पर, बंगाल का जो डिवीजन हुआ था उस पर, उनकी जो लैंड पॉलिसीज थी उसके ऊपर बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस से पहले के बंगाल की क्या दशा थी, क्या रीजन था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस उसकी ये स्थिति रही, किस तरह से ये सब हुआ, और क्या कुछ आज हमें अफेक्ट कर रहा है, आज के टाइम, आज के युवा को, आज के समय जो वहां की सिटीजन है उनको क्या चीजें अफेक्ट कर रही है उनकी पास्ट की वजह से। इन सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं राजा मुखर्जी के साथ। सो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। और अगर आपके कोई व्यूज है या आप कुछ रखते, आप कोई व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या आपका कोई नजरिया है इस टॉपिक को लेकर, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ वो सब शेयर कर सकते हैं। सर, नाउ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लैंड एक्विजिशन का बंगाल की जो सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, prior to independence, right, there were few things which were very easily available in Bengal, and one of the main commodity of Bengal was jute. And this jute industry used to be one of the single largest commodity industry in Bengal. ये जूट का जो मैसिव प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन जोन था आज का बांग्लादेश में। सो ये जो पार्टीशन हुआ 1947 में, ये जो पार्टीशन जब हुआ और ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ और बंगाल हुआ, सडनली ये एक लकीर खींच गया, और ये जो लकीर खींच गया उसके बाद
suddenly one day market saw that the production is on the other side of the border and it is landing up there, and the trade is on this side, where the traders are very eagerly waiting for raw materials, but the raw materials is also not with them, right? एक लकीर खींच गया. And it become a very complex situation because pre-independence, Lord Curzon and the British, very effectively used this religious, belief and the religion for this division. So they created a frustration in the mind of the rural Bengalis, who were both Hindu and Muslims. And so the Hindus, they voted for, staying on one side where they are a majority, and the Muslims, they voted for staying on the other side where they are a majority, right? So there was a sense of mistrust between them. Also, if you dive deep into the history, आप जो सोशल फैब्रिक की बात कर रहे हैं, इसका एक भी ये कारण था, जो अगर अब मैं न्यूट्रली बोलूं, कि उस टाइम का जो ब्रिटिश नेट जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार थे, मोस्टली वेर हिंदू जमींदार एंड एलिट क्लास ऑफ पीपल. मुस्लिम जमींदार भी थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं थे, बट इट वॉज डोमिनेटेड बाय द हिंदू जमींदारी सिस्टम. एंड दिस मुस्लिम पेजेंट्स and the grassroots workers used to work under them, and there was a lot of oppression over there. ब्रिटिश लोग इंडिगो प्लांटेशन के लेके वेरी फेमस एक ये है बुक है, नील विद्रोह बोल के, राइट? So it was the indigo plantation, right, which British had created a massacre across Bengal, right? And back to back on them, backed by the British elite lordship and other things, right? Titles. This Bengal zamindari system actually, in some way, they exploited the rural poor, both the Hindus, both the Muslims, right? So what happened when Muslim League supported for Pakistan, and the Congress was for a completely united Bengal, right? The British could actually engineer a complete mistrust based on the religious divide, and that became successful despite a lot of Swadeshi movement and Bongo Bongo Andolon, means like anti-Bengal divide movements happened, right? It did not pave the way to a very smooth succession, but ultimately on this day of this 20th June in 1947, the voting happened, and as I said, the historic stamp was signed, and the East Pakistan and West Bengal was created. West Bengal went to India with Calcutta as the capital, and the East Pakistan did Dhaka as capital, annexed to Pakistan. Right. Later on in 1971, East Pakistan liberated themselves from the Pakistan rule, and they become a free country called Bangladesh. So that is the actually social fabric which was knit on the backdrop of conspiracy, on the backdrop of brotherhood, brothers who used to work together on the field. They used to do business together, Hindus and Muslims. The British very effectively engineered a pure religious divide, which you still see there in Bengal, right? The polarization, very much there, right? And it was that mistrust led to this, division of resources, division of power, division of, growth, excellence, and everything. And the British achieved what they had to achieve, right? And ultimately, India got liberated from British rule, right? But it was a broken India, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये अपने आप में बहुत एक दुख दुख की बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी यूनिटी नहीं रह पाई और इतने सारे पार्टीशन में भारत जो है वो बट गया. जरूरी है इन चीजों के बारे में बात करना और इन चीजों का जो रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करें, डिस्कशन करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि जो जनरेशन अभी इस समय है उनको इन सबका हिस्ट्री का पता चल सके. और मेरे ख्याल से सर, इस तरह के जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बुक्स इस तरह की जब आती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में हमारी सोसाइटी के लिए. सर, पार्टीशन की अभी आपने बात की कि पार्टीशन की वजह से कितने सारे रेफ्यूजीज जो है वो
उनके लिए एक तरह से जीना मुश्किल हो गया था उस समय पे। जो रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस समय, पार्टीशन के बाद बंगाल में जो रेफ्यूजी क्राइसिस ने किस तरह से लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज को शेप दिया, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। किस तरह से पॉलिसीज को शेप दिया गया फिर? देखिए, एक बात तो ये है कि in the early part of 1947 till the 70s, right? It was a Congress-led government in Bengal, right? The center was ruled by Congress under Jawaharlal Nehru as the then Prime Minister. I will not call him the first Prime Minister of India because the first Prime Minister of India has been recognized as Netaji Subhash Chandra Bose, right? Under the Azad Hind Fauj by our Yeah. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. So basically, what happened during the Congress rule, the same zamindari system jo tha, zamindar, bhumihar, means like people who own blocks and chunks of land, and there was one section who were like daily wage laborers, right? They used to toil under them, right, for production of cultivable commodities, you name it, everything, right? So they used to be daily wage workers, and the very structure of the farmers became very weak under this zamindari system under the Congress. And it was only in the 1970s, late of 1970s, when the Jukta Front government came in Bengal, and then followed by a massive win of the left bound, CPIM, right, which we call the Left Front, right, that the major land reforms and major, land policy shifts took place, right. So the left, after coming to power with a massive mandate in 1970s, 77, right, they started operation, something called Operation Barga, right? What was Operation Barga was that the title of the land was given to the farmer from the zamindars. There was land selling act which was applied. That's, you cannot hold a certain piece of land beyond a certain limit within the city, right? And lot of such transformations. So the peasants who used to work on a land for ages and through generations were the first time owners of land under the left rule. So they basically came to power on the bottleneck of this power of the have nots, right? और वो जो ट्रेंड था, that continued and kept them alive for 34 years. The rural Bengal supported them, right? These land reforms supported them, and it identified them as a messiah for the people who have nothing. That is, they are the son of the soil, the aboriginals, जिसको हम भूमिपुत्र बोलते हैं, right? उनके लिए ये एक मसीहा था कि उसका जो आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी, वो लैंड से उनको दिख रहा था, और वो जो लैंड उसको दिख रहा था, वो ही उसका पहचान बन गया. तो वो ये सोच भूल गया, वो इंडस्ट्री भूल गया, वो ये भूल गया कि उसके पास और भी कुछ हो सकता है और उसका लड़का को यूनिवर्सिटी भेज सकता है. वो यूनिवर्सिटी जरूर भेजा, स्कूल जरूर भेजा, लेकिन वो जो लैंड के ऊपर खड़ा होके उसको वो जो पट्टा मिला, जो टाइटल मिला, वो एक उसके लिए सोशल आइडेंटिटी बन गया. एंड दैट्स व्हाई लिविंग दैट लैंड was literally psychologically impossible for him down the line, right? So the same land which brought the left into recognition under Operation Barga and gave them the strength, the rural Bengal voted for them decades after decades, became the nemesis for them when they tried for the development of Bengal and brought the Tata into Singur, and they wanted to do a chemical hub in Nayachar, in the Western Midnapur and Nandigram, right? So, encashing that, the current ruling government under Mamata Banerjee staged land protest and big movements. And ultimately, you saw that in the election of 2011, Trinamool Congress came to power with massive majority, right? So that was one part of that. So the Congress ruling Bengal, from there, the left taking over, right, on the strength of the factory workers, peasants, the common man on the ground, right, and the transformation. And as soon as under Buddhadev Bhattacharya taking charge from Jyoti Basu,
the then Chief Minister, Buddhadev Bhattacharya, first time started the dynamic development for Bengal by bringing in industry into Bengal, that same land become a big issue, right? And definitely it was the fault of the CPIM that they did not plan the land distribution or land acquisition pretty well. It was completely irregulated, and the valuation of the lands were not done properly. The peasants were not properly educated. The farmer community, the sustainable community, which had supported left, they felt threatened. And the Trinamool Congress government under Mamata Banerjee took that as an opportunity, and definitely political, activism will come up. It came up, and she was voted to power. Right today, Mamata Banerjee continues to be a, though she is a pro industry lady, right, and she has been in the cabinet of Sri Atal Bihari Vajpayee and Rajiv Gandhi ji, and so many politics, both for the NDA and UPA. She has been, ministers in the cabinet, but she continues a pro farmer, pro, tribal, stand, and do not, right, do not, officially uh, have an aggressive stance when it comes to land acquisition. However, when you come to the party as a whole, the brokers and the land syndicates and the land mafias continue to reign and grab land from the farmers and from the, aborigines. So there is a lot of displacement of the aborigines. There is a lot of displacement of the sustainable livelihood all across Bengal, right? And this is one of the biggest business today in Bengal, right? But the trend continues that there is no structured, policy making when it comes to how we should acquire land, what type of land we should acquire, and how the farmer rights and the industrial needs can be balanced under the social engineering. That is not there, Right, right. and this continues. सो मिस्टर मुखर्जी, आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, अभी भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है फ्यूचर के लिए? So when I started documenting, the first question that came to me and came to my mind and came to my everything is that there is so much barren land lying on the either side of the highways. Why you have to really go in for the farmer land? Why farmland? Is it because it is cheap? Is it because it is easily, it can be grabbed at a low price and sold at a very high price? So, again, there is a vested interest which is circling all around, right? It is not that there is no barren land in Bengal and it is not well positioned. Of course, there is. There is so much of it, right? But somewhere this vested interest is whenever a industry is declared or an MOU is signed, you will find in any many places now in Bengal that the farmers are actually cultivating the land, right? But the actual paper of that land or the power of attorney of that land is vesting with someone who is belonging to the syndicate. And this is a neo nationalistic zamindari system which has evolved in the name of the syndicate. All right, all right. So now, Mr. Raja Mukherjee, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे क्विकली करने वाली हूँ, आप उसका क्विकली आंसर देंगे। तो हम शुरू करें? Sure, sure. Okay. So मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी वो है जो आपको सुकून देता है। आपका रात को नींद में जब आप सोते हो तो आपको एक अच्छा नींद देते हैं। समथिंग which is close to your heart. Suppose I love eating, right? Sometimes going to a coffee shop and drinking a coffee with some French fries gives me immense peace over going to a शादी का घर और जहाँ पे there is a 18 course dinner, right? So that one cup of coffee with some French fries is एकदम दिल की खुशी। और हर एक के पास ये खुशी का डेफिनेशन अलग अलग सा होता है और ये मोमेंटरी है। मीन्स लाइक आपका जिंदगी में बहुत सारा टाइम है
जिसमें आपका जो खुशी का डेफिनेशन है, it keeps on transforming, right? For me, as of now, I want to do something for my nation, for the land where I am born. इसमें मुझको बहुत खुशी मिलेगा, बहुत satisfaction मिलेगा. And this is the reason I have left corporate banking and a very structured salaried job and come down, into social and political activism. ओके, इसमें अगला मुझको सवाल है। खुशी मिलता है. ओके, अगला सवाल है मेरा, आप इमोशनल है या प्रैक्टिकल? बहुत इमोशनल बंदा है. I'm very happy to say that I'm a एब्सोल्युटली। very very emotional guy. Yeah. ओके, ओके, अगला सवाल, आपकी राइटिंग जर्नी का इस बुक की राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड क्या रहा? ये टफेस्ट पीरियड ये था कि एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था बिकॉज कि आई एम पॉलिटिकली समवेयर, आई बिलोंग टू समवेयर, राइट? एंड द एंटायर इवेंट इन बंगाल इज वेरी स्क्यूड, इट इज वेरी पोलराइज्ड. सो मेरे अंदर एक सोच था कि शुड आई राइट ऑन एज अ पॉलिटिकल गाय, as a neutral person, or should I be biased? Should I put my thoughts into the book, or should I actually depict the actual picture in the book? So that was the toughest decision which I had to take. It was like a crossroad, right? During the chapter alignments, during the sub headlines and all these things, these thoughts keep on dwelling, right? So मैंने सोचा कि let me put facts forward. और एकदम बुक की जो अंत में जो सेक्शंस है कि व्हाट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें जो सजेशन दिया हुआ है दैट इज माय पर्सनल थॉट्स. मैंने जो इन माय ओन आईज व्हाट एवर आई सी will do good to the people of Bengal, to the next generation, is something what I have put. But when it comes to what has happened and how it has happened and why it is happening, वो थॉट को मैं न्यूट्रल एक विजन देना पसंद किया. एंड दैट डिसीजन took me some time to decide. And of course, my wife Vidisha Mukherjee Sen, she helped me a lot in deciding that, because she was contradicting me all the while, and she was asking me consciously, why do you want to write on such a boiling topic? It's a very volatile topic, because in 2026, right, we are coming up with 3 Vidhan Sabhas, right? Like in Tamil Nadu, we have an assembly election. We have Bihar assembly election coming up, and Bengal is going to vote. So these 3 states are very important for the central government, any central government, right? Whoever is in power. So nobody would like to lose any of these 3 states. And in all these states, the issue of the farmers, the issue with the farmers, and the issue with the son of the soil, be it tribal community, be with the aboriginal people, it has sometime or the other touched the political spectrum. And, I think I have touched upon this book very consciously, taking a very tough decision, but the decision is now taken. ओके, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? वो मेरा वाइफ मुझे मोटिवेट करता है. वो बोलता है एक ही चीज की, बिलीव इन योर सेल्फ and believe in yourself and believe in yourself. So she is the pure motivation, because I was not so confident about myself. I'll be very frank. I was not at all confident about writing a book or taking myself through this journey. Thoughts तो देखिए आते हैं, लाखों thoughts आते हैं, लाखों सोच आते हैं. वो सोच को एक डिसिप्लिन के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर डालना, ये एक बहुत डिसिप्लिन की चीज होता है. एंड माय वाइफ इज वेरी डिसिप्लिन्ड. She said, either you go for it or you leave it, right? If you decide to go for it, then you have to be very disciplined in your thoughts, in your structure, and you have to leave something, leave a footprint, which uh, others will follow. And not to leave out my parents. My father is no more. He was the part of Ministry of Defense. He wrote playwrights, and those playwrights were very famous, right? So he has been a very big inspiration for me, because he always said that I don't want an engineer in my house, I don't want a doctor, I don't want a civil servant, but I want a scholar in my home. This nation lacks scholar. Be a scholar. Be someone whose pen will rule the country, right? So he has been an inspiration. And of course, my mother, she has been a school teacher. She has educated me well, right?
So my mother and wife is a very deadly combination actually, right? Which I could not sustain, and I decided to go for a first identity. This is like a social identity for me to write this book. It's just not being an author, get interviewed and all. It's like a social identity, and I have embarked on this journey. एब्सोल्युटली सर। ओके नाउ सो ये सेगमेंट यही फिनिश होता है। मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि कोई कांटेक्ट डिटेल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर हमारी ऑडियंस आपसे अब तक कनेक्ट हो Yeah, चुकी है, पर्सनली आपसे कनेक्ट होना चाहेंगी, आपसे गाइडेंस लेना चाहेगी, तो एनी कांटेक्ट डिटेल जो आप शेयर करना चाहेंगे। yeah, actually, yeah. Actually, I have already shared my email. Right, I'm यस, always on my प्लीज email, बताइए। यस, 24/7. Yes. It's Raja Mukherjee, RajaMukherjee @gmail.com. This is my email ID. And you have my WhatsApp, 24-hour WhatsApp and mobile number, 8776 99902. Right? So you can WhatsApp me on that with your name, from where you are writing to me, and what is the question, or how and why you would like to connect with me, and I would be very happy to answer. सो दोस्तों अगर आप राजा मुखर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनकी पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। कमेंट सेक्शन में भी हम एक बार लिखेंगे, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं और इनसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सर, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? राइटिंग को लेकर कोई और किसी और प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है अभी? Well, actually, I would also like to thank, your entire team, right? There's a थैंक यू lot सो of inspiration also which has come from Neetu, because Neetu has been also a guiding star. She has been, always in touch. I could always get her over a phone, write scribble messages to her. She would always get back to me. And, I asked her, I said, this is something which was in my heart, and I am a guy from a major background of finance, right? So I was thinking of a second book which is on aircraft financing. How would you finance my startup airlines, right? And it's a very funny book actually. ओके। So most of the entrepreneurs, they don't find investors, they don't know where they lie, how to get upon to them, how to walk into the investors' room and pitch it up, right? So then Neetu said, let's discuss the topic, and sir, when are you going to write? And she is always after me, right? Sir, please write, please start the second project, right? मैंने बोला कि आप एक तो खत्म होने दो, right? I am super excited, एक खत्म होने दीजिए। बोले नहीं sir, start off. When you have finished one, start off with the other, right? Let's get going. और ये सोच अब बंद मत कीजिए, right? So this now will become a habit for me to think, to structure content, discuss, and I'm very happy with your team. The way your team has taken up the entire project, right? Thank you so much to all of you, right? And I'm blessed to get in touch. थैंक यू सो मच राजा जी, आप हमसे जुड़े, अपनी बातचीत आपने हमारे साथ शेयर की, किताब के बारे में इतना अच्छे से इंसाइट्स आपने हमें बताए, और बंगाल के बारे में आई एम श्योर बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को जानना अभी बाकी है, तो लोगों को भी बहुत कुछ पता चला होगा आज की डिस्कशन के माध्यम से, और आई एम श्योर आपकी बुक जब पढ़ेंगे तब उनको और भी ज्यादा डिटेल में सब कुछ पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, और हमसे जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. Thank you very much. Bye-bye. सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, डे 9 हमने कंप्लीट किया राजा मुखर्जी के साथ। सो हमने बातचीत की बंगाल के बारे में और डिस्कशन किया कि उसका पास्ट कैसा था, किस तरह से लैंड डिवीजन हुआ, वहां के सिटीजन को क्या कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, और आज वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ नए इंसाइट्स आपको मिले होंगे, और इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या फिर अग्री या डिसअग्री है किसी भी पॉइंट से आज के डिस्कशन के, तो आप कमेंट सेक्शन में वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नई बुक के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, एक नए ऑथर के साथ डिस्कशन करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
आज के ऑथर की बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप वहां जाते हैं और इस बुक को परचेज करते हैं, अमेज़न लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वहां पर से आप उनकी ई बुक या फिर इनकी हार्ड कॉपी को परचेज कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस बुक को। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।